comment. अच्छा करायचं start? Okay. Hello guys. Good morning to all of you. As you know that UPSC Prelims Civil Services 2022 result has been out, as the prelims was conducted on 5th of June to 2022, and surprisingly UPSC announced result within, exactly on 17th day after the prelims. So I did expect result within 24-25 days, but this was quite interesting that result came out within 17 days only. So we from Infinity IAS Academy, Pune, that we are conducting the overall analysis of the result of the prelims 2022 and what should be the approach for the next attempt, as well as students those who have qualified this prelims and those who haven't qualified for the time being. I deliberately use the word for the time being. That is why in the civil services examination you never fail. It is just that your success is just postponed. So always keep in mind guys that you have to be very cautious while going through this journey as far as the competitive exam environment is concerned. So myself Goraksha Sangle, ex-ACIO from Infinity IAS Academy, now as a lecturer here for economics and ethics. So we are conducting now today an analysis of this UPSC prelims result analysis. See, if you see the cutoff range, what would be the cutoff, sir? Many candidates ask, sir, what is the cutoff or what might be the cutoff? As you know that UPSC declares cutoff, official cutoff, after the entire process is over. So here today they haven't declared any kind of cutoff, and it is just that we guessed what would be the cutoff. The last year cutoff was 87.54 for the general category. My assumption and my guess is that this year cutoff would increase little bit, and that increase would be nothing but in between 88 to 93. The upper would be 93. I don't think it will cross 93, but there is a slight increase in it. Obviously it will increase. For the OBC, as you are seeing here, you are watching here that what would be the range of the cutoff for the UPSC prelims 2022. Now after this, what happened actually this year, the vacancies were near about 1004 vacancies, 1004 vacancies, and that is why 13,000 students qualified for prelims, for mains. Now these students, these 13,000, the strength of 30,000 will appear for the mains, which is to be conducted on 16th of September. Right. Now for this examination, or for the mains approach, what you have to do, that we will study one by one, that what would be the procedure, and those, now you know that lakhs of students appear for preliminary examination, only thousands qualified. So what about the rest of the students? तो अभी क्या है कि कुछ लोग मतलब ज़्यादा टेंशन होगा कि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर इसको मिलते रहेंगे, मैंने तो इतना अच्छा किया था, 2 ही मार्क से कट ऑफ रह गया. ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है. See, this is struggle, that is quite obvious. Now there are many students, some will say, sir, I qualified prelims, but how should I prepare? So what syllabus I have little time in my hand. Okay, we understand your concern, but what I would like to suggest you is that this examination is not only about information and knowledge. Information and knowledge are the part of the process, but they are not the heart of the process. So heart of the process is your broad understanding the syllabus, understanding the previous year question papers. So for the candidates, those who have qualified for mains, what they have to do, first of all, they have to go for syllabus.
do not study any topic out of your syllabus. I mean, there have been instances when candidates go in depth analysis of the topics which have not been mentioned even in the syllabus. They might get information, they might get knowledge, but they are not able to qualify the mains examination. Now, second thing is PYQs, previous year question papers. Now you will say, sir, is there any possibility that UPSC in mains examination do they repeat questions? We are not concerned about whether they repeat the questions or not. I am concerned about they repeat the topics. I mean, in the land reform, suppose the land reform is the topic for the mains, there have been many instances when UPSC asked question on land reforms in mains. So my point is here that PYQ analysis gives you insight of how the mains pattern is there and what should be the approach for study. Second thing, importance of micro notes. Third thing, micro notes. Whatever you will study for the mains examination, so micro notes is quite important. Now the rule of the micro notes is what actually, if you are reading 100 words, then you should have the ability to make it in short notes, that is 1/10, nothing but 10 words. If you are able to do it, you can revise it. Again, the fourth factor is revision. However material you read, whatever material you read, but if you are not able to revise it, you will not qualify civil services examination. Now, in this section, if you study syllabus, PYQs, micro notes, revision, and one more and last but not least, the important factor, the fifth factor is nothing but writing answers. So you write the answers, get it checked and improvise in the next test. Now many candidates ask, sir, should I write 10 questions daily, 15 questions daily? Doesn't matter. What you should do is that within a week or even on a daily basis, if you should write something, at least for the essay like topic, on every Sunday you should write at least 1 or 2 essay. That is not a big deal for candidates, and get it checked, because only writing is not going to help you. If you have the expert faculty of that particular topic, get it checked from that faculty and improvise your answers gradually. Now this will add value addition in your answers, and it will fetch you marks, because in mains examination you should have this. I mean, I'm talking about the candidates, those who have qualified prelims, but how should I prepare so vast syllabus, sir? It is not an rat race actually. It is not a rat race. It is not an examination of information, not an examination of knowledge only. It is an examination of your approach, your presence of mind, your common sense, and lot of things are there. In minimum times, how should you catch up the syllabus? What should be the major areas? What should be the major topics which you have to study? And for that purpose, I have told you that you have to go through the syllabus very carefully, go through the PYQs very carefully. Whatever you will read, just make micro notes of it and revise those micro notes, and last but not least, make writing practice of it. And all these factors are going to help you to fetch the mark in mains examination. Remember carefully that it is the mains examination actually which will make your seat confirmed in UPSC final list. That is, it will decide whether you will become IAS or whether you will become IPS or whether you will be in the list or not. That's all. So for those students, and one more thing which I would like to add, that be careful about while filling your DAF, detailed application form. Now what is DAF actually? Why I am saying that you should be very careful, because whatever you are going to write in this DAF, that is going to be asked in the interview. So be careful. कुछ भी मत लिखो यार, मतलब किसी ने उन्होंने पूछा है कि आपके हॉबीज क्या है, तो मत बताओ कि मुझे म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है. सही में इंटरेस्ट है तो वही लिखो, वरना आप कुछ भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने देखा है कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि डैप में कुछ याद नहीं आ रहा है तो लिख दिया कि रीडिंग इज़ माई हॉबी. अब रीडिंग कितनी वास्ट चीज़ है, मतलब इसमें क्या क्या रीड करते हो वो भी स्पेसिफिकली मेंशन करो.
तो जो चीज आपको पसंद है, बचपन से आप करते आ रहे हैं, जिसमें आप ज्यादा रुचि रखते हैं, उस चीज को आप मेंशन करो। क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो बहुत अप्लाइड होते हैं, और ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। अभी आप फॉर्म भर के डैफ को फिल करके आप आराम से जाओगे इंटरव्यू में, तब जाके आपको दिक्कत पैदा होगी। फिर आपके चेहरे पे पसीना आ जाएगा, फिर आपको मार्क्स कम आएंगे। जहां तक IAS बनने जा रहे थे, वहां से या तो आप लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं, या फिर कोई आपको लोअर रैंक मिल जाएगी, IAS IPS नहीं मिलेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको डैफ बहुत केयरफुली फिलअप करना है, दैट यू शुड हैव इन योर माइंड अबाउट this mains examination and the pattern and all those things. So I hope you have cleared your doubt. Those candidates who are saying that, sir, what should I do after prelims? I am qualified for the mains. Time is less. It is not about time. It is about execution of time. आप टाइम को किस तरह से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ज्यादा मायने रखता है। अब बारी आएगी, कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में हैं अनफॉर्चुनेटली, सर आई डिडंट क्वालिफाई, व्हाट शुड आई डू हेंसफोर्थ। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग टेंशन में हो गए। आई नो दैट, आई नो द पेन बिहाइंड इट, आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस इन द लास्ट फॉर द लास्ट 10 years। यूपीएससी आपने चुना है, आपको यूपीएससी ने न्योता नहीं दिया था, फोन नहीं किया था, हमको भी नहीं, आपको भी नहीं, कहा नहीं था कि आप आओ भाई यूपीएससी में आप भर्ती हो जाओ, आप तैयारी शुरू करो, ऐसा कोई बोला ही नहीं था। तो मुद्दा यह है कि आपको ये इट इज स्ट्रगल बाय चॉइस, स्ट्रगल बाय चॉइस। इफ इट इज स्ट्रगल बाय चॉइस, देन वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट इट, वी शुड बी वेरी एक्सेप्टेबल टू द सिचुएशन। यस, आई डिड in the prelims, I did well, but I didn't qualify. So what should be the next approach? अब ये ज्यादा मायने रखता है। अब प्रीलिम्स खत्म होने के बाद ये जो समय आपके बीच बचा है, 1-2 दिन के लिए रोना धोना ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको फिर वापस आपके ट्रैक पे आना है। पर कैसे ट्रैक पे आना है, ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो प्रीलिम्स के बाद फिर फेल होने के बाद प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक। So don't repeat the mistakes. Don't repeat the mistakes. गलतियां करो, लेकिन गलतियों को दोहराओ मत। नई गलती होनी चाहिए बार बार। पिछली बार जो कर रहे थे वही पैटर्न को लेके जा रहे, तो आने वाले समय में आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अब मुद्दा यह है कि करना क्या है। अब आपके पास जो टाइम बचा है, अब आपके पास टाइम है जुलाई से लेके, जून लगभग खत्म होने को है, जुलाई से लेके जनवरी तक का पीरियड। मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2 हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं, जनवरी टू मई, जो कि 28 मई को 2023 को आपका प्रीलिम है, राइट। अब इस दौरान आपको प्रीलिम्स को करना है, तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। जो भी बंदे अभी इस बार, जो भी लड़के, जो भी एस्पिरेंट्स है, दोज हु हैव नॉट been selected or they are not able to qualify prelims 2022, if they are looking at 2023, what should they do? They should go from July to January, that is almost 6 months period, 6 months period, and that should be given exclusively for mains. इसमें सिर्फ आपको मेंस करना है। अब मेंस करना है यानी कैसे करना है, सर हमको क्या पता है हम मेंस कैसे कर पाएंगे। तो मेंस कर रहे हैं आपको, हर बार 15 दिन में आप कम से कम एक एक टॉपिक को हम डील करेंगे कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली इस दौरान, इस समय में, ठीक है। तो मेंस में हम क्या करेंगे, शुरुआत जो आपकी है, गो थ्रू द जीएस। अगेन वही अप्रोच है जो मैंने पहले बताया था मेंस के बच्चों के लिए, PYQs, सिलेबस, PYQs, syllabus, and the factors which here are nothing but a reference book, reference books. The limited source you should have actually for this, and prepare GS accordingly. तो क्योंकि जब क्या होगा कि आप अगर मेंस नहीं कर पाओगे तो अगली बार 2023 में आप प्रीलिम्स भी पास कर पाओगे, तो उसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं होगा।
तो अभी से आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी है। मेंस के टॉपिक आपको खत्म करने हैं। कम से कम 4 जो जीएस के पेपर हैं उनमें से 3 पेपर्स एटलीस्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड एटलीस्ट, आपके जनवरी तक होने जाने चाहिए ठीक तरह से, वो भी। और जो आपका ऑप्शनल है, आप कहोगे सर ऑप्शनल के बारे में क्या करेंगे, तो कम से कम कोई एक पार्ट पढ़ लो अच्छी तरीके से, पार्ट 1 या पार्ट 2 जो ऑप्शनल का होता है, तो उसको ठीक तरह से पढ़ लो ये समय में। ज्यादा मेस भी क्रिएट नहीं करना है, सभी चीजें एक साथ भी लेके नहीं जानी है, धीरे धीरे से लेकिन सटीक तरीके से आपको इस अप्रोच को फॉलो करना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब जो है तैयारी शुरू करना है। कुछ लोग बोलते हैं सर हम ऐसे की क्या तैयारी करेंगे, हम डायरेक्ट जाके लिखेंगे, तो मार्क्स भी वैसे आएंगे आपको। जिस टॉपिक को आपको 250 मार्क्स है, एथिक्स का पेपर है उसको 250 मार्क्स है, हर एक जीएस की उतनी अहमियत है, तो लिखने की कोशिश करो। 3-4 दिन में 1-2-3 आंसर लिखो कम से कम शुरुआत में, और उसको चेक कर लो। आपको समझ में आएगा कि आपकी राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है, आपके पास मटेरियल नहीं क्या, ये बात कंटेंट नहीं है क्या, ये समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज ये है, हो सकता है कि आपके पास कंटेंट है लेकिन आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। तीसरी चीज ये भी हो सकती है, प्रेजेंटेशन ठीक है लेकिन आपकी लैंग्वेज में गड़बड़ हो रही है। तो ये सब चीजें तो तभी समझ में आएगी जब आप लिखने की कोशिश करोगे, तब जाके आपके मार्क्स बढ़ेंगे और तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जनवरी से लेकर जून तक, मई तक का जो पीरियड है 2023 का, वो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। प्रीलिम्स के लिए आप बहुत रिलैक्स प्रिपेयर कर पाओगे और प्रीलिम्स का अगली साल रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आना तय है। लेकिन उसके लिए आपको यहां से जुलाई से लेके जनवरी तक का जो पीरियड है उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंस के हिसाब से इस्तेमाल करना है, राइट। हम उसके लिए अलग से सेशंस लेंगे इन्फिनिटी आईएएस एकेडमी की तरफ से कि कैसे कैसे इस अप्रोच से डील करना है। यू कैन विजिट फॉर द एकेडमी फॉर द सेम पर्पज। सो दैट शुड बी द अप्रोच। एक्चुअली जैसे मैंने पहले कहा था कि रोना जो है 1-2 के लिए ठीक है, ज्यादा दिन देवदास बनना ठीक नहीं है यूपीएससी में। सर आई डिडंट क्वालिफाई, व्हाट शुड आई डू हेंसफोर्थ, हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है, इस अप्रोच से जाना है आपको। पहले मेंस को उठाओ, मेंस की तैयारी करो, आगे जाके तभी आप ठीक तरह से इसमें तैयारी कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा ये स्ट्रगल बाय चॉइस है, आपने खुद कदम उठाया है, अपने आपको यूपीएससी करना है। पब्लिक से आप सिर्फ सिंपैथी ले सकते हो, सक्सेस नहीं। सक्सेस आपको खुद को ढूंढनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा आपकी गलतियां क्या हुई, क्या खामी आ रही है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करो। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि हमारी कुछ गलतियां ही नहीं हुई, यूपीएससी बहुत टफ पेपर निकाल रही है आजकल, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई विनर का एटीट्यूड है। विनर का एटीट्यूड ये है कि यस 13,000 बच्चे पास हो चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, मैंने क्वालिफाई नहीं किया है, इसका मतलब जरूर है कि 13,000 बच्चे इस साल उस एग्जाम में काबिल रहे हैं। मुझ में कुछ कमी है जो मुझे पूरी करनी है, आगे के अटेम्प्ट में मुझे उसको खत्म करना है। आपने गुलाल फिल्म देखी होगी, उस फिल्म में एक डायलॉग है, वो बहुत ही बढ़िया डायलॉग है, ये कि सब वो जो प्रोटैगोनिस्ट है वो कहता है कि जो आप अपना खून बहाना नहीं चाहते वो सपना देखना छोड़ दो, ये साकार नहीं हो पाएगा। तो ये बात है, यहाँ पे आपको खून बहाना पड़ेगा। अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, खुद को एक स्ट्रक्चर्ड मोड में लाना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं इन्फिनिटी आईएएस एकेडमी। यूपीएससी सीएससी मेंस टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, कि फर्स्ट 3 टेस्ट जो है वो फ्री है। अब मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको, जिन बच्चों को ये करना है कि सर हमें करना है सिविल सर्विसेज को, तो जरूरी नहीं कि आप इस साल की मेंस को हो सकता है आप अगले साल की मेंस दे रहे हो, लेकिन इस टेस्ट सीरीज को करके आपको फायदा क्या हो सकता है कि आपको आपकी खामियां नजर आ जाएगी, और ताकि आपको अच्छा समय मिल पाएगा, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा अच्छी तरीके से इंप्रोवाइज कर पाओगे। ये टेस्ट सीरीज दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश एंड मराठी मीडियम, and we have the renowned and expert faculty under the guidance of Mr. Bhushan Deshmukh sir, who has been in the field of competitive examination for the last many years. I mean, he has mentored hundreds of students, thousands of students actually, who have been in the service. So you will get the guidance of renowned faculties here. Coverage of whole syllabus, focus on answer writing, content, structure and presentation. What I talked to you earlier, that
what is the approach in this test series, then a comprehensive strategy and approach, then evaluation by expert faculties. All the faculties of the Infinity IAS Academy have been the expertise of UPSC Civil Services Prelims as well as mains, or the entire process. Then you will have a detailed discussion of offline as well as online. The 12th June has been the date. Actually 1 or 2 tests have been conducted, and you should be I think that personally it is my suggestion to the genuine candidates, I am using the word genuine candidates, those who want to pursue civil services as their career, that they should look like these kind of options if you have available there already. Then we have launched political science and international relation optional batch, and this is again by an expert faculty of polity, Mr. Sachin Kadam sir. For the last many years, he has been, more than 15 years, he has been in the field of civil services, and has a quite deep experience of the syllabus of political science and international relations. The entire syllabus will be covered by himself only. And one thing is very important, that is nothing but linking theory with current development to help mains examination. Candidate prepare, but only preparation is not going to helpful actually. Static content should be linked with the current content, and our faculty has a specialty in that. So guys, thank you so much for this prelims result analysis session video. If you have any queries, you can contact Infinity IAS Academy. Thank you so much.